Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to और Baithak with three Khans actually. I have Umair and Ahsen with me today, and we will be discussing current World Cup topic. यस ये कॉन्वर्सेशन उर्दू में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, तो रेडी रहिएगा। और आपके फीडबैक हमें डेफिनेटली चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सो सब्सक्राइब करें channel को सब्सक्राइब करें, correct. So let's start with that. World Cup 2023 in India, guys. Um, break the ice. Come on, say something about it. Obviously disappointment तो है भी as a Pakistani fan. वो जो इंडिया का जो मैच हुआ था did not look good, did not look positive. जो deficiencies है हमारी, हम I don't think इस World Cup में बस I think तुक्का लग जाए तो हम जीत सकते हैं. I think we're a semi-ized team, we can make it. लेकिन I think unpack करके इनको realize करके इनको fix करने में I think काफी time लगेगा. We probably need a whole host of different players on this team. लेकिन देखते हैं, अभी तो बस दुआएं हैं इंशाल्लाह. Inshallah. Ahsen? आई बिलीव सो फार सो गुड. एक गेम ही हम लोग हारे हैं इंडिया से, क्योंकि इट्स बीन टफ टाइम विद लाइक अगर आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री देखें, ऑल द टाइम इंडिया के साथ जितने गेम्स हुए हैं वी लॉस्ट इट इन वन डेज. सो यू कैन से दैट यार जैसा होता था वैसा ही हुआ है. तो लेट्स नॉट लूज द होप एंड लेट्स सी हाउ वी हैव फॉर द नेक्स्ट गेम. सो लेट्स सी. Yeah, fingers crossed. Hopefully, अगले गेम के अंदर टीम की फॉर्म की वापसी हो, कैप्टन साहब फॉर्म में वापस आए. We need our openers to click. I think इस वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो सिलेक्शन का रहा है. और इस वर्ल्ड कप से पहले जो हमारी सीरीज हुई थी, एशिया कप ले लें या एशिया कप से पहले जो अफगानिस्तान सीरीज हुई थी हमारी, एशिया कप से पहले हुई थी, राइट? जी जी. तो उसके अंदर भी हमारी बॉलिंग कुछ हद तक एक्सपोज हुई थी. कीप इन माइंड, उसमें नसीम शाह भी था, उसमें शाहीन अफरीदी भी था, उसमें हारिस रऊफ भी था. और दूसरे गेम के अंदर दे स्कोर्ड 200 प्लस विदाउट लूजिंग एनी विकेट. And one of the batsmen went up to 151. The first wicket fell when that guy hit 151 runs. I think it was Gurbaz, if I'm not wrong. जी जी. तो कहने का मकसद ये है कि बॉलिंग, जब आपको पता है कि कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था वहाँ पे, फिर उसी श्रीलंका के अंदर आपका एशिया कप होता है और हमारा एशिया कप इतना अच्छा नहीं जाता. तो सिलेक्शन के लिए, और आपने अपनी सिलेक्शन भी इतनी पुश आउट की थी कि आपने प्रीटी मच सबके बाद ही अपनी टीम सबमिट की थी. तो यू हैड ऑल दैट टाइम टू सेलेक्ट गुड प्लेयर्स और एटलीस्ट सेलेक्ट गुड बैकअप्स. नाउ जैसे कि हम लोग कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर गॉड फॉरबिड रिजवान को कुछ हो जाता है तो वी वुड हैव अ पार्ट टाइम विकेट कीपर कमिंग इन. अगर रिजवान जैसे एक आध दिन के लिए, एक आध मैच के लिए बैठता भी है, तो वी हैव ओनली अ पार्ट टाइम विकेट कीपर इमाम जो कि कर सकते हैं, राइट? तो वी डोंट इवन हैव अ फुल टाइम विकेट कीपर टू टेक हिज स्पॉट. इसी तरह जो हमारे पास अच्छे जिनको हमें टेस्ट आउट करना चाहिए था, जिनको हमें डेब्यू कराना चाहिए था, जैसे कि साइम अयूब है, ताहिर तैयब है, अबरार है, मोहम्मद हारिस को टीम में रेगुलर करना, ये सारी चीज़ें दे शुड हैव डन ड्यूरिंग दी अफगानिस्तान सीरीज. हार भी जाते कोई मसला नहीं था, ये लड़के थोड़ा सा एक्सपीरियंस पकड़ते और आप इनको वर्ल्ड कप में लेके आते तो आपका बेंच स्ट्रांग होता. सो आई थिंक आपको लगता है कि एक सीरीज काफी होती, वो भी अफगानिस्तान के साथ? आई डोंट नो. सो आप हसन अली को किस बिरते पे लेके आए? I mean, उसका तो वैसे he's played 70 ODIs or something, right? तो उसका तो काफी एक्सपीरियंस है. When was his last ODI? 2 साल हो गए हैं almost, right? 2021 में शायद. Right, so जब आप चांस दे सकते हैं इस तरह किसी को भी, ठीक है ना? अगर आप थोड़े बहुत ODI सीरीज, खास तौर पे ऐसी पिचेस के ऊपर, एंड माइंडेड अबरार हैज परफॉर्म. मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं किया या वन हिट वंडर थे कि भाई एक मैच के अंदर छक्का लगा के जिता दिया तो दैट्स इट. Saim has been performing. Tayyib Tahir has performed. मोहम्मद हारिस वर्ल्ड कप में आया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर and he performed. So ये लड़के हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं.
आपकी Yeah. टीम को, आपके बेंच को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है. बट अच्छा. मूविंग ऑन, इंडिया पाकिस्तान के गेम के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर. आई थिंक टीम इज अ लिटिल अनएक्सपीरियंस्ड एट दिस पॉइंट. तो उसकी वजह से प्रेशर हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. there were some issues जो कि overwhelming थे. फॉर एग्जाम्पल 100% क्राउड आपके अगेंस्ट हो, आप ऐसी जगह पे जाके खेल रहे हो जिसके बारे में आपके लोकली आपको इतना कुछ बोला गया हो कि यार वहां पे तो आपके साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा. Right. एक मेंटल बैरियर, एक मेंटल प्रेशर तो बनता है उसका. वो सारे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो आई थिंक वो बहुत हाई प्रेशर गेम था. एंड इट्स जस्ट बिगिनिंग. राइटफुली सेड, जैसे एहसन ने कहा कि अभी हमने सिर्फ एक ही गेम हारा है. there are other teams who actually lost couple Yeah. games, or they're struggling, big teams. So I think inshallah there is a chance, there is a hope कि Pakistan जो है they can make it to the semis, hopefully. Let's see how the Australia game goes. I'm not sure because मुझे लग रहा है कि जब इंडिया से हम इतनी बुरी तरह हारे हैं, right? And then all that pressure, all the sloganeering and all the chanting और ये सब और इतना बुरा मीडिया का जो प्रेशर इनके पास है, will they recover from that, right? इतनी बुरी हार जो आपकी, this is probably one of the bigger defeats that they've had. They lost by over 20 overs I think रह गए थे और उन्होंने आराम से चेस कर लिया. So can they recover mentally from that? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. या और यही एक प्लेयर की निशानी होती है, अच्छे प्लेयर की, कि आप you care less about what everyone else is saying, chanting, taunting, whatever they're doing in the stands. Let them be over there, let them do whatever. अक्सर मैंने सुना है लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ. You know what, it should not affect the Pakistani players. Pakistani players are there to play, to win, and to come back. They lost the game. I totally understand. The pressure was immense. Completely understandable, but that's not an excuse. Yeah. That is अच्छा. not an excuse. Issues हमारे ऑलरेडी पहले से बनते हुए आ रहे थे, जिसमें सिलेक्शन है, जिसके अंदर आप एक ही टीम आपकी T20 भी खेल रही है, ODI भी खेल रही है, टेस्ट भी खेल रही है. तो एक आपका कांस्टेंट फटीग जो होता है, कांस्टेंट प्लेइंग से, वो भी उसके अंदर है. मतलब आप 2-3 हफ्ते पहले ही आपका एशिया कप और वो सारे चल रहे थे, उससे पहले सीरीज चल रही थी, और आई मीन बैक टू बैक एक ही टीम आपकी खेली जा रही है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग. आप ये देख लें, न्यूजीलैंड अभी रिसेंट गेम्स के अंदर मेरे ख्याल से केन विलियमसन ने शायद एक ही गेम खेला है. जी. They did not even, Yeah. brought him in the playing 11, or he did not include himself in the playing 11. So कहने का मकसद ये है कि there are multiple things to keep your side fresh and effective. I believe अगर हम perspective के player के perspective से सोचें, as you said Yasir, if you keep on playing and playing without rest, फिर ना आपको उसकी जो वैल्यू होती है ना उतनी नहीं रहती. अगर शाहीन है तो he's playing since long, like keep on playing. I don't say कि वो अपनी अभी इसमें full effort नहीं दे रहा होगा, but think about his own perspective. एक होता है ना आपको ब्रेक मिला है and then you come back again. एंड इसी तरीके से विलियमसन का जो तुमने एग्जांपल दी, तो विलियमसन जो जितना वो इफेक्टिव अंदर होता है फील्ड के, वो बाहर बैठ के भी है आई बिलीव, क्योंकि आई बिलीव उससे ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है. अगर वहाँ से बैठ के वो जो गाइड कर रहा होगा या व्हाट्सएवर, यू कैन सी न्यूजीलैंड राइट, दे आर ऑन टॉप राइट नाउ. सो दैट्स द थिंग. और समटाइम्स हम भी जब खेलते हैं अपना टूर्नामेंट जो खेलते हैं, आई there was a match. Yasir was not there, but I was doing a captainship in that match. So I sat down और मुझे लगा कि मैंने बाहर से बैठ के उस मैच को ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया and we won that. So because you don't feel that pressure in the field. जब आप as a captain in the field में होते हो, आपको बैटिंग भी करनी है, आपको make sure करना है कि बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त हो रही है. But once you sit out, वो प्रेशर उठ जाता है because you are not there. You don't have to show your performance. कि मुझे जाके बैटिंग नहीं करनी यार, फिर मैं कैप्टनशिप पे फोकस करता हूँ, मैं बैठूंगा यार, गाइड करूंगा. तो ये भी एक चीज है. Maybe you can have a better view of it. Sorry, Yes. तो आपको लगता है कि हमारे जो अभी 15 या 18 हम कैरी करके जा रहे हैं, do they, you don't see anyone in that team that has that type of a role like a Sarfaraz would have had? Exactly. That's what we are saying. Sarfaraz would be the best option. Sit सरफराज down. तो यकीन करें, जो सिलेक्शन में सबसे बड़ी जो इशू है सिलेक्शन से मुझे पर्सनली,
was the inclusion of Sarfraz. Now, a lot of people will be like, "Hey, यार, आप उसको support कर रहे हो कि वो कराची वाला है या he's done and blah blah blah." उस बंदे ने आपको इतनी सारी सीरीज जीत के दी है, आई थिंक 11 सीरीज और समथिंग, और एक सीरीज उसके बाद हारा था जिसके बाद उसको बिठा दिया. सो आई एम नॉट सेइंग कि उसका सिलेक्शन या उसका एब्सेंस जो है वो इस वजह से है कि वो क्योंकि कराची से है या जो भी है, लेकिन देर आर सम बायसेस इन आवर सिलेक्शन प्रोसेस. अनफॉर्चुनेटली देर इज फेवरेटिज्म, वी कैन नॉट डिनाई दैट. देर इज there is some friction among players and selectors themselves. बिल्कुल. So, but again, हमारी टीम वहाँ गई है, हमारी टीम को हमें बैक करना है. We want them to win whatever the circumstances are. Regardless, we are going to back them up. जी, जरूर जरूर. So yes, अगर हमारी टीम के अंदर सरफराज होता, अगर कैप्टन ना भी होता, अगर वो एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी होता, that would have helped the team like nothing else. आपको गेम्स के अंदर आके आपको ये जो जगल करना पड़ रहा है अपना प्लेइंग 11, ये आपको नहीं करना पड़ता. अच्छा, सही है. तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर तो सो करने के लिए, आई मीन देयर स्टिल अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग चल रही है इधर अहमदाबाद से, अभी चेन्नई जाएंगे, उससे पहले हैदराबाद, और देन No, I think श्रीलंका they're से in लाहौर, ये Bengaluru right now. Yeah. अच्छा. So all Yeah. this traveling back and forth, and then the players are sick. So do you think that is also taking a toll on the team? Of course, यार, थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर तो उसमें रहता ही है कि यार पता नहीं हम फिट होंगे नहीं होंगे by the time the game comes around. लेकिन अगेन फॉर अ बिगर प्लेयर इट शुड नॉट अफेक्ट. जैसे युवराज सिंह ने शुभमन गिल को कहा था कि भाई मुझे तो कैंसर था और मैं खेल रहा था, तुझे तो सिर्फ बुखार है. So इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत दे, लेकिन again it should not affect the players. They put it this way, the players should not take the pressure from this thing. सही. Right? उनको अपना mind clear रखना चाहिए. What do you say, Ahsen? Totally. I mean, totally agree on this. मुझे लगता है जो नेक्स्ट गेम है is gonna be very important. ऑस्ट्रेलिया वाला, पाकिस्तान के वो they're coming from a defeat. It can go either ways, but they will try their hard to win that one. But ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वार्म अप गेम भी हुआ था, so they have little experience playing with Australia in this same tournament. It's gonna be a second game. Right. Yeah, we'll see how it goes, but I believe that's gonna be a very important game for Pakistan. Inshallah. So let's put it this way, जब ये बात निकली है, top 4 in the semis. That's a good one. मेरे लिए है India, New Zealand. I still think England will make it, and Pakistan. What do you say, Ahsen? New Zealand, India, Pakistan. The fourth one will be obviously Australia is very down right now. We can't say much at this point, but still, England or South Africa. Probably South Africa. Yeah, I would say, of course, India. मैं तो यही कह रहा हूँ कि इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा most probably, but it's cricket. India, New Zealand, South Africa, and then the fourth one would be either one of the three: Australia, England, or Pakistan. Whoever win most matches in this case, because all three of them are pretty much capable of doing anything. There were a couple upsets, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि they are they are done. They're not. पाकिस्तान को तो हम स्पॉट दे ही देते हैं ना, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही दे देते हैं. Semi-final spot, because we are Pakistani, so we give them a spot. Oh, we will be in semi-final. Correct. But realistically, doing the manifestation that we are in semi already. कप उठा रहे हैं, और I'm guilty of it actually. I went to ChatGPT and I typed in that type me a speech for Babar Azam when he lifts the Cricket World Cup 2023. Wow.
And ChatGPT actually did write me a speech. So Let's do that tomorrow. Let's bring that up tomorrow yeah, in our it's podcast. hilarious. So I want you to hear from you. yeah, beautiful, beautiful, beautiful. या बताएं Okay, एक चीज कि पहले तो लग रहा था कि सारी बैटिंग पिचेस होंगी दैट विल बी लाइक रोड्स, हर कोई 350 400 मारेगा, लेकिन अभी तो लास्ट 3-4 मैचेस एट लीस्ट राइट जो अपसेट्स हुए बड़े बड़े, the teams have not crossed 300. So ये हो क्या रहा है? I don't understand. Have like the curators It came down. realized and Started up but came down now. शुरू के मैचेस में हुआ था scores, but now it's yeah. not going up. yeah, I अच्छा think अभी अफगानिस्तान वाला जो गेम था उसमें भी स्पिनर्स जो हैं वो गेम वापस लेके आए थे। yeah Yeah. उन्होंने काफी कंट्रोल किया था। नॉट अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड। उसके अंदर अच्छा उन्होंने काफी कंट्रोल किया था और स्पिनर्स ने दे रियली हेल्प। सो इसका मतलब बॉल टर्न हो रही है, गुड स्पिन। अगर आपके पास रियली गुड स्पिनर्स हैं देन यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल द गेम। अच्छा और इंडिया पाकिस्तान की गेम के अंदर अगर आप देखो यार, यस कुलदीप यादव को हम लोग नहीं रीड कर पा रहे थे। इवन के व्हाट्स हिज नेम जिसका होम ग्राउंड है, जडेजा पांड्या 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 अच्छा अच्छा पांड्या की बॉल को भी उसको रीड करना मुश्किल हो रहा था। और जो कटर्स आ रहे थे दोज वर क्रेजी, यू नो, बॉल लग के जो मूव हो रही थी उसको रीड करना वाकई बड़ा मुश्किल हो रहा था। Yeah. तो नॉट नेसेसरली कि सारी पिचेस जो है वो अ, ऐसी हैं कि या तो बिल्कुल ही स्पिन हो रही है या बिल्कुल ही रोड पिचेस हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि टीम्स जो है वो अलाउ कर रही हैं ऑपोजिशन को इतना स्कोर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टीम्स, अच्छा यू नो। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट फील्डिंग, आपकी फील्डिंग आपको बहुत बहुत हेल्प करती है। अगर आपकी फील्डिंग सही रहे और आपके कैचेस ड्रॉप नहीं हो रहे, आप बाउंड्रीज रोक रहे हो, दैट हेल्प्स अ लॉट, दैट डज हेल्प अ लॉट। अच्छा या सो टेल मी यार, तुम लोगों को जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, अभी एक आ रही थी, आई वाज रीडिंग अबाउट इट टुडे, कि पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को लेटर लिखा है या कंप्लेन की है बेसिकली कि अहमदाबाद के क्राउड जो था वो सपोर्टिव नहीं था या व्हाटएवर। व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट इट? व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जस्टिफाइड है राइट। आपने इफेक्टिवली जर्नलिस्ट को बैन कर दिया है, मीडिया पर्सन नहीं आ सकते, ना कोई फैन आ सकते हैं, सर वो गए थे बेचारे चाचा शिकागो से, गरीब नवाज वाले राइट, Yeah. दैट्स द ओनली पर्सन आई कुड सी इन द एंटायर क्राउड। तो इट्स कंप्लीटली यू नो सीम्स लाइक जब मिकी आर्थर ने बोला था कि ये बिल्कुल बीसीसीआई बैंड लग रहा है, आईसीसी लग रहा है, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम, लाइक इट प्लेज अ ह्यूज रोल राइट। अगर हमारी 30-70 भी होती रेशियो, so I think we would probably would have had I'm not making an excuse, but I'm saying we would have had a better chance. ओके ऐसा। Yeah. But I don't know if it really matters because I was talking to a friend today who basketball बहुत follow करता है and all other games. So he was telling कि sometimes होता है कि आप किसी जो यहाँ पे एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाके खेलती है, so sometimes उनका कोई crowd नहीं होता and people use words, they just calling names and all those stuff, but उनका सही game पे effect नहीं पड़ता। तो और फिर अगर आप यही कह रहे हैं तो what if about the game that happened in Asia Cup? उसमें भी हम लोग अराउंड 200 रन हमने बनाए थे एंड वी लॉस्ट इट राइट। तो गेम तो सेम था, उधर तो क्राउड थी, श्रीलंका में हो रहा था, कहाँ हो रहा था फर्क है एनीवेज, बट जहाँ भी हो रहा था वहाँ क्राउड थी थोड़ा। तो आई डोंट नो इफ रियली मैटर्स फॉर द सेक, सही है शोर होता है, आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो व्हाटसएवर, बट अगर आप प्लेयर हो, आप गेम खेलने आ रहे हो, आपका फोकस है, तो जस्ट गो एंड प्ले योर गेम, यू नो। हाँ या वो अगर 90s के ये पाकिस्तानी प्लेयर्स होते मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। दीज आर यू नो यंग लैड्स हु हैव नो एक्सपीरियंस, कभी इंडिया ना जा चुके हैं वो लोग, सो दे हैव नो क्लू व्हाट दे आर गोना एक्सपेक्ट, इट्स एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट राइट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर डेफिनेटली गॉट टू देम। या अगर प्रेशर शोएब अख्तर होता तो बात, शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर इज बॉलिंग, तो ही डजंट केयर कि अगर यू नो thousands of people chanting for him, making his noise, so he can make them, you know, quiet, या because with his bowling he's gonna bounce a ball like that, hit somebody, you know, something stuff. So yeah, I agree तो to your point.
See, I would say कि PCB का ICC के पास जाना और इस चीज का कंप्लेन करना कि स्टैंड्स के अंदर लोग क्या कर रहे थे, I think that was irrelevant to the game, in my humble opinion. And I apologize to contradict with, or disagree with you. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि it should not matter unless कि भाई आपके प्लेयर्स को किसी ने हर्ट किया है, आपके प्लेयर्स के ऊपर, जैसे कि पहले इंडिया में हो चुका है कि Water वगैरह राइट, with जिसकी वजह yeah. से गेम जो है उन्होंने बंद कर दिया था, रोक दिया था. तो इट्स नॉट फार फेच, इट डिड हैपन इन द सेम कंट्री, लेकिन दिस टाइम अराउंड नथिंग लाइक दैट हैपेंड. They can say whatever, they can do whatever, they are free to do anything they like. The problem is कि हमने अपने प्लेयर्स को उसके लिए प्रिपेयर करके नहीं भेजा था. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे प्लेयर्स हैदराबाद में उतरे, they were surprised to see the welcome that they have received. They loved it. They were not expecting it. Yeah. लोगों ने जिस तरह से वेलकम किया, लोगों ने जिस तरह से उनको इनवाइट किया, उनको इवन के मैच के अंदर उनको चीयर किया, उनको. और अगेन, आई डू नॉट question their patriotic feelings towards their own country. सही है. Cheering for another country in their own country doesn't mean that they went anti-national or something like that. That's a very stupid rhetoric that media tried to impose on you. वो बेचारे खुशी में शामिल हो रहे थे कि चलो यार, ये हमारे मेहमान आए, ये जीत रहे हैं किसी और से, we cheer for them. I don't think so there is any harm in that. So उस चीज को भी दिमाग में रखना चाहिए कि yes, it is just one stadium where it happened. But if you look at what was happened in the other two games, in the other two previous games, everyone was supporting us like nothing else. So क्या अब आप उसके लिए जाके क्या करेंगे? ICC को So, जाके गुलदस्ता देंगे कि यार देखो हमारे साथ ये हो गया, so this was out of ordinary, no, you this is know? exactly the reason what I'm saying कि हम श्रीलंका को chase नहीं कर पाते 340, what is it, 344, 345, right? Yeah. Only because we had Dil Pakistan playing and इतनी support मिल रही थी, इतना सब मिल रहा था. So that's why I'm contrasting it. अहमदाबाद में आपको कुछ नहीं मिला था ऐसा. So वो शर्म में चले गए बेचारे कि उनको तो बस नारे अलग-अलग पता नहीं सुनने में मिल रहे थे उन्हें. So So that's there's a a whole weakness of different. right. So that's a weakness of the players then. Okay, yeah. तो वो experience नहीं है ना. Probably the kind of welcome they got in Hyderabad, they thought that this is how it's gonna be the whole tournament. But jab they went in the Ahmedabad, they got surprised, they got different stuff, and that's nothing against them. But this is what it is. It's a game. This is अगर आप अपने state में खेल रहे हो, it's gonna be good, right? आप किसी और state Yeah. में जाओगे, अगर उनके सारे लोग होंगे, so they will cheer for their own state, your own country or whatsoever. Yeah. So to my point is that experience. If you have experience handling this kind of situations, situations, I must say, then you could have played better. इस पे depend करता है कि I totally agree on that. I totally agree. so it Because is what it is. Yeah. it is, आपको अपने players को strong करना पड़ेगा उसके लिए. Because when you're walking into that den, you know that what you're walking into. You got to be Yeah. prepared. You prepare for the worst and hope for the best. So उनको पता होना चाहिए कि यार जब हम लोग उस स्टेडियम में उतरेंगे तो we might face this. And I think Rizwan, which leads to my next topic, Rizwan की नमाज का issue जो था, quickly if you guys just want to say something about it. Yeah, मुझे तो लगता है कि unnecessarily उसको issue बनाया जा रहा है because you are allowed to do whatever you want, right? जब आपको break मिल रही है तो आप उसमें चाहे bathroom break ले लो, आप नमाज पढ़ लो, चाहे आप gossip कर लो, banana खाओ, जो भी है, it's your own personal time. So I don't think he's making a political statement कि मैं इस stadium में आके नमाज पढ़ूंगा and this and that. I think it's just him following his belief and that's it. So I don't know why the media and the people, especially when he got out, उन्होंने क्या chants जो कर रहे थे उसके against, that was completely unnecessary. Ahsen? I agree. अगर आपके game आपका जो game techniques है, I would say your game is too up कि आप इतना अच्छा खेलते हो, so you don't have to worry about those kind of stuff. कि आपको इतना I don't know कि आपको इतना क्या कहना चाहिए, I'm just not getting the word,
कि इस चीज़ों पे होना चाहिए कि somebody is praying namaz that would affect your game. So if you are so good in the game, then let anybody do it what they want to. Right. I think वो जो जिन साहब ने FIR लॉन्च की है, I think he is somewhere from Delhi or somewhere, हाँ Mr. हाँ Jindal. तो उन्होंने ये बोला है कि it's against the spirit of the sports of cricket, that he's praying in the ground and yada yada yada. Yeah, I think it was baseless. I think it is still baseless. I Yeah. think it's not gonna get anywhere. They just created this, थोड़ा सा शोर शराबा किया है कि सबकी अटेंशन मिल जाए इनको, और Mhm. कि देखो हम कितने बड़े पेट्रियट हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दिस एंड दैट। नो यार, हम लोग भी यहाँ पे काम भी करते हैं, रहते भी हैं उन लोगों के साथ जो इंडिया से हैं, एंड वी नो हाउ दे आर। माय डॉटर was seen by a doctor who she was from India. One of my really good friend, he is a child specialist in Colorado. He is from Maharashtra, India, and mashallah, the way the bond we have, he comes over, stays with my family for a week or so, and that's how Amazing guy. things are. That's how things are. Let's bring him someday. Yasir, Yeah, he's yeah, an yeah. amazing guy. Definitely, I miss him. definitely Yeah. to get the perspective, of course. So मेरे कहने का मकसद ये है कि I don't think so I'm going to, जहाँ तक रिजवान की जो कंप्लेन का इशू है, I don't think so कि उसके अंदर कुछ वेरेज है। वो इतनी व्हाट्स द वर्ड फॉर इट यार, कि इतना इफेक्टिव नहीं होगी वो किसी चीज पे, एंड आई डोंट थिंक सो रिजवान केयर्स ईदर। दैट वाज माय पॉइंट कि रिजवान जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग है इस मामले में। So he doesn't care. Trust me, he would be Yeah. playing right now in the Bengaluru ground while practicing. I'm sure. I don't know if he has done it or not, but I'm sure he would do that. But when it comes to playing in India, I would say that so far it has been fantastic. So far it has been amazing for Pakistani players. And they should focus on the bigger picture, how they've been treated for the most part. Even in Ahmedabad, they were treated well. It's just that the crowd was the crowd was there to support their team. All right. Yeah. Let's not take it away from them. Yes, Look. and on the bright side, think about it. I mean, कितने साल बाद पाकिस्तान got a chance to go play on the land of India. कितने भी Right. जितने भी players हैं, Babar Azam, I don't know when did he play last time in India. No, he never did. Not never, right? And he's the person No. who's been playing for Pakistan almost 10 years. So आप और लड़कों का तो सोचें, उनके लिए एक lifetime experience है. Right. Now they are getting a chance, so that's a good thing. We should, Correct. embrace it and see, Correct. yeah. And on this That's true. point, Yasir, I'm doing that thing, the same gesture that we saw in the ground. Right. All right. एडा तू कोई विराट कोहली हाँ? यार खेलता तो यार मैं ओपनर भेजता तो मुझे वो बात खेलता अलग। कोहली की तरह है, because trust me, Wow. so guys, my dear audience, a little insight. Ahsen और मैं हम दोनों Ahsen और मैं हम दोनों एक ही टीम से खेलते हैं. I lead a team called Chicago Elite. Ahsen is my vice captain. Times where he actually scored close to a century in a 12 over game. He did it. मैं इसको वही बोल रहा था कि भाई खुदा के लिए थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर कर, but again he I played still get nightmares of that, getting out on 91. Right. Oh, I wish I could have done it. I wish I could, but it is what it is. Right. But next time, inshallah. And inshallah, in the next summer season, I'm sure you would be one of the highest scorers. I can see that, I can tell that, and I would love to see that, inshallah. But any case, guys, I think we are right on the mark. I think we had a very good, healthy, meaningful discussion about cricket. And finally, last remarks. What about tonight's game? India versus Bangladesh. Who gonna win? Is the question. I think unanimously sabhi India ko bolenge. I'd be shocked if anyone says Bangladesh. This is not Asia Cup, right? So they're gonna come strong with their A team.
भाई Yeah. एशिया कप के अंदर भी they India sent their B team, exactly what you're saying. India sent their B team in the Asia Cup and they lost. And बांग्लादेश की भी बी टीम and थी that's यार, बांग्लादेश की बी टीम थी because बांग्लादेश start from B, right? बांग्लादेश. oh. And that's exactly what I was trying to make a point earlier कि यार कुछ सीरीज के अंदर कुछ गेम्स के अंदर you have to send your B team ताकि आपके प्लेयर्स खेल सकें उसमें उस एनवायरनमेंट में, और आपकी दूसरी जो बैकअप प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले खेलने की, सो दे गेट द कॉन्फिडेंस टू, ताकि अगर ऐसे बड़े टूर्नामेंट है आपके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे या खुदा ना खास्ता एंजॉय हो जाता है, देन योर बैकअप प्लेयर्स वुड बी रेडी टू टैकल. बिल्कुल. बट एनीवेज, उमेर, last remarks. I think the next match for Pakistan, 60-70% chance Pakistan ka hi hai. Babar plays amazingly usually, against Australia. So hoping he turns up, and charon ke match Shahid Afridi bhi inshallah, or sorry, Shaheen Afridi bhi, comes back to form, and I think we got this. इंशाल्लाह. माय फीलिंग्स आर लाइक, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं, और पाकिस्तान अगर उसामा मीर को लेके आते हैं द चांसेस गोना गो अप. अनफॉर्चुनेटली शादाब इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट इन द फॉर्म. अगर उसको रिप्लेस करते हैं उसामा मीर को लेके आते हैं, आई थिंक द चांसेस विल गो अप. और इंशाल्लाह आई थिंक वंस दे विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर नेक्स्ट अनस्टॉपेबल हो जाएंगे. Yeah. उसके बाद अगर एक आधा गेम हार भी जाते हैं, not a biggie, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना is very important at this point. So Yeah. let's see. Yeah, I think our team is very, goes in ebbs and flows. So जब हम momentum में होते हैं and we're rising, then when we catch heat and we keep going higher. So I think अगर ऑस्ट्रेलिया वाला जीत जाएंगे, फिर momentum हमारे साथ में होगा. Inshallah. All right, guys. Thank you so much for your time. Inshallah, till the next podcast. आप सबसे लेते हैं इजाजत. प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और इंतजार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. एक चीज आई विल टेल यू कि क्या कट करना है, मैं बताता हूँ क्या कट करना है. ओके. अल्लाह हाफिज. All right. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. बाय.